एक साल का जस्ट इमेजिन एनी कार कंपनी इज लाइक बाय द कार, 1 साल का पूरा फ्यूल हम पे। हाँ साला वो कंपनी तो लूट जाएगा। Hey guys, what's up? How are you all once again? Welcome back to the channel. Hope you guys enjoyed the nice time-lapse that I took from my balcony. किसी ने सही कहा है, बालकनी जो आप किसी और के घर में जाते हो, किसी और के घर में जाकर देखते हो, तो आपको लगता है कि यार बालकनी ऐसी चीज़ है कि हमारे घर में भी होनी चाहिए। यू नो लाइक काश मेरे घर में बालकनी होती तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं रोज़ शाम को बैठ के वहाँ पे चाय पीता। बट एक्चुअली व्हेन यू बाय अ हाउस विद अ बालकनी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एज इन लाइक बालकनी इज़ लाइक दूर कहीं चली जाती है। शायद कभी कभार कोई दोस्त वगैरह आए तो उसको दिखाने के लिए खुलेगी, या फिर वीकेंड पे कभी मन किया तो, या फिर डेली बेसिस पे तो मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, एंड शायद मैं सिर्फ 2 या 3 ही बार बैठा हूँगा। एनीवेज जो भी है जैसा भी है, माई फ्रेंड रोहन इज़ गोइंग टू कम टू आवर प्लेस, बिकॉज मैंने जैसे कि आपको लास्ट में बोला, रोहन लिव्स जस्ट अराउंड 10 minutes फ्रॉम दिस प्लेस। रोहन सेड कि यार तेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आ रहा हूँ तुझे दिखाने के लिए, एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर यू एंड इट्स अ सरप्राइज विद 4 वी रियली वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट रोहन इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग इन। वैसे रोहन कल रात भी आया था ऐसे ही चिल करने के लिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे कैसा होता है, बिकॉज इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, तो वहाँ पे पीछे गेट है। सो व्हाट हैपन इज रोहन या फिर एनी विजिटर हु कम्स टू आवर प्लेस विल हैव टू कम थ्रू द विजिटर्स एंट्री। एक बार वो विजिटर्स एंट्री में आए, फिर वो हम लोग के घर का जो ये एक्चुअली ऐसा हो गया ना कि इवन दो आई मूव्ड आउट, फिर भी आई एड्रेस इट एज हम लोग के घर, इवन दो इट्स माई घर। तो मेरे घर का जो नंबर है वो वहाँ पे दबाता है वो, एंड वंस ही डज दैट, फिर उसके बाद मेरे फ़ोन पे फ़ोन आएगा फ्रॉम द गेट। तो वहाँ से मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है, आई जस्ट हैव टू प्रेस अ नंबर 9 ताकि वो वहाँ पे गेट खुल जाता है, एंड देन आई कैन लेट हिम इन। तो दिस इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे नीचे तो बजर वाला सिस्टम है, जो कि मुंबई के भी काफ़ी घरों में होता है, न्यूयॉर्क के तो बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि अगर कोई नीचे आके यहाँ पे वहाँ पे बजर दबाएगा तो फिर ऊपर आई कैन इधर टॉक टू देम, आई कैन लिसन टू देम, एंड इफ आई कैन जस्ट प्रेस अ बटन टू ओपन द डोर नीचे वाला, तो फिर आदमी सीधा ऊपर यहाँ पे आके मिल सकता है। सो आई गॉट दिस फ़ोन एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने हिट 9, तो वो गेट उधर खुल जाएगा। So that's how the gate opens over there. Alright, so I can see what Rohan has got, and I think I'm already loving it. So let's go down and quickly check. What's up? What's up, dude? Yeah, what's up, dude? क्या लाया? टेस्ला लाया। मेरा भाई का। Oh wow, white seats. Yeah, dude. Red exterior, white interior. That's really bold, right? As in, होता तो मैं पूरा like I would have just like dirtied the whole thing with white. Alright, so this Tesla Model Y was one of the most recently launched models. I think Model S के बाद Model S के पहले जो launch हुआ था, that was Model S Plaid के पहले जो Plaid के पहले जो launch हुआ था, that was a Tesla Model Y, and this is a mid-size SUV I think that Tesla offers. मतलब अगर X के और मॉडल 3 के बीच में कुछ है तो इट्स वाई, एंड यू नो लाइक इट्स द इंटीरियर इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मॉडल 3. द ओनली नाइसर पार्ट इज़ लाइक it's quite above the ground, so you don't get the feeling of like sitting very close to the ground. And as you can see, it has a complete glass roof that is a Tesla speciality, and this amazing screen in between. And then हम लोग अभी छोटे से ड्राइव पे जा रहे हैं, and once we like come back, what I'm going to do is I'm going to show you all the little things that this car can do and why it makes it so special. The thing about the Tesla is you can see where your car is, and it actually can show you the cars around you, so that's really nice. And the torque. And the one thing that makes a Tesla completely unique is its torque.
if you guys remember the Porsche vlog that I made, I said ki I really like the vibration, you know, like the feel of a fuel powered car. But then if you sit in a Tesla, and the torque is going to be like absolutely next level, and it's like it's a completely different feeling, you know. So like you cannot actually compare between a petrol powered vehicle versus something like a Tesla. And you can see the AC controls also like this, so the animations are like so good. And यहाँ पे signal भी दिखता है. So it's यहाँ पे red signal है ऊपर, so you can also see the red signal. And because it's a red car, so the car that you see here is also red. And now, Yeah, everything is automated. You cannot actually open the glove box with a button that's directly on the glove box. What you'll have to do is you'll have to go to the system, and then, or you can, I think, even just voice command, right? So now Rohan is going to do a speed acceleration test, being in the speed limits, so you guys can see. Okay. It's like barely within a few seconds, I think 4 or 5 seconds, it easily goes above 60 miles an hour, which is almost 100 kilometers an hour for you guys. Wireless port? wireless charging port, yeah. Oh, that's nice. The interior is like very simple, but then it's very high tech also. Yeah. है ना? The sound system is mind blowing. रोहन, हाँ. पेट्रोल भरा ना? अबे वैसा एक मीम भी था बीच में कि someone stopped at the gas station actually Trying to fill up the car, right? बाद में पता चला कि उसके बूट में वो जनरेटर था, वो उसके लिए, और उससे वो चार्ज करने Just वाला imagine था. पीछे वाले क्या सोच रहे होंगे, मतलब they must be like ये क्या कर रहा है ये बंदा? If there's a flat tire, there's no backup tire. Oh, okay. So, and Valet key. Okay. valet key. So what it does is, let's say if you're going to a club or an event and you have valet parking, you give the guy this key, and he'll park your car for you and hold on to it before you come Okay. out. Credit card. It looks like a credit card in a wallet, किसको but it's चाहिए very गाड़ी की fragile. चाबी? Okay. It's very fragile. So if it scratches once, you have to pay $200 to get a brand new one, and that key will stop working. So does it have like any restrictions when you use that key as compared to a regular key then? No. So the main key is a cell phone, but if your phone's died and you have that, it's going to help you get to your location with that key. Okay, so that's nice. So it can also act as a backup key. Yes, it is a backup key. Oh, that's nice. Another thing that I like, really like about all Teslas is almost like, I think all Teslas come with a frameless door. So whenever you open this door, वैसे door यहाँ से खुलता है, उसका button ऐसे होता है, and then yes, the door is frameless, which kind of gives it a sort of supercar feel, you know, like a lot of supercars usually have frameless doors, so that's nice. And रोहन ने आगे और पीछे दोनों की डिक्की खोल दी है. Because it's an electric car, तो आगे इंजन तो है नहीं, and पीछे का trunk is this big, which is quite nice. And अभी आगे का डिक्की, ये आगे का डिक्की. वैसे ये दोनों डिक्की भी बटन से खुलता है ना अंदर से, हाँ, अंदर से ही मतलब खुलता and there's no button, there's like वो टच स्क्रीन से ही करना पड़ता है. आगे तो कुछ है ही नहीं, पीछे एटलीस्ट बटन है. Okay. बाहर एक्सटीरियर पे, लेकिन आगे तो कुछ नहीं है. Also, this comes with a portable charger. Okay. So let's say you're on the road and you're going to someone's house, but they don't have a Tesla charger. So you can just plug it in the You wall. have a charger in the back, in the trunk, Okay. and that charger you can plug into the outlet anywhere. Anyway, And okay. it'll- So in case you are driving cross country and you don't find a place, then you can just go to your regular McDonald's and then ask them to let you charge. But also usually what you would do in a Tesla is आप अगर long drive पे जा रहे हो, you will just put your final destination and Tesla will give you a route. And Tesla will give you a route जिसमें it will route you through the superchargers on your way, so that you know, like, you don't have to sort of like go searching for places that have a charger. What you can do is, especially on a long drive, वैसे भी you take a break after like 200 or 300 miles, so you can drive, you can just wait at the supercharger for 30 minutes, go have your break or do something, watch Netflix inside the car, and then till then your car is fully charged and ready. So Samil, how much is the like, how much does it cost to like charge it fully from zero? Well, it depends. So when I got my card, they give you 1 year free charging. 1 year free charging? 1 year. Ooh, So wow. I got mine in last year December. So Uh-huh. now January of this year to January of next year,
free charging. So like there's But- no cap, there's no limit. No, but if you go above the limit that Uh-huh. it gives you, so let's say you set it for 90%, it goes a little bit above, they will charge you after that. Okay, so that's still really nice. I think then एक साल का just imagine any car company is like buy the car, एक साल का पूरा fuel हम पे. हाँ, साला वो कंपनी तो लूट जाएगा. So a few good things about buying a Tesla is one that you get a $5,000 rebate on taxes, right? So you get $5,000 back on the price that you pay for this car. Secondly, do subscribe to my channel if you haven't already and subscribe to the bell icon दबाना मत भूलना ताकि आपको सारी notifications time पे आती रहे. Also, if you like this video, do hit the like. If you dislike, you can dislike it also. I'll see you in the next one. Till then, stay safe, have fun. Have Peace fun. out. Peace out.